Wish you a very good morning, students. You are most welcome to my next class, uses of simple future tense or future indefinite tense. We use shall or will as helping verbs in the structure of simple future tense. We use shall with first person pronouns I or we, and we use will with second and third person pronouns in general sense. But if there is a threat, a promise, or a determination, this rule gets changed. In that case, we use will with first person pronouns and shall with second or third person pronouns. We have discussed this concept of shall and will already in the previous videos. Then we shall use subject, shall or will, first form of verb, base form of verb plus object, and sometimes a time phrase, an adverb of time is given or is used at the end of the sentence, which indicates the action yet to happen, yet to take place. Means it will take place in future. If we want to change it into negative, use not after helping verb and before base form of verb. If we want to change it into interrogative, interchange the position of helping verb and subject. In this way, we use shall or will and base form of verb to construct future indefinite tense. Now, let us see where do we use simple future tense. I have categorized the uses of simple future tense into 5 categories. Let us discuss each category one by one. First of all, simple future tense is used to express an action yet to happen. Means the action which has not happened or which is not happening, it is yet to happen. It will happen in future. For example, I shall go to Jaipur next week. This adverb of time phrase next week indicates that the action is yet to happen. I shall go, shall is used with I because there is neither threat nor determination and nor a promise. In this way, we will use shall with I. If there is an indication, if there is a keyword which expresses its determination, promise or threat, then we will use will with I. For example, I will go to Jaipur next week surely. In this way, we shall use shall or will in different sentences of simple future tense. Next example is, they will come here on my coming birthday. On my coming birthday means my birthday is yet to come, and they will come here, they will visit here on my coming birthday. The action will take place in future. In this way, we use simple future tense to express an action which is yet to happen. Next is, simple future tense is used to express an offer or promise. If I want to offer something or if I want to make a promise to someone, then we shall use simple future tense. For example, I will give you a prize if you stand first. This is the first conditional sentence. I will give you a prize. मान लीजिए कोई पेरेंट्स या कोई टीचर किसी बच्चे को मोटिवेट करने के लिए पहले से उसका प्राइज डिक्लेयर करता है, तो हाउ विल ही डिक्लेयर द प्राइज? आई विल गिव यू ए प्राइज, आई विल गिव यू ए प्राइज मीन्स प्रोमिस है उसका. नॉट शैल, I will give you a prize if you stand first.
After if we use simple present tense, and in case of promise we shall use simple future tense. It can be written in reverse order too. For example, if you stand first, I will give you a prize. But in that situation we shall use comma after the first clause. But here we need no comma because these two clauses are joined with this conjunction if. Next is, I shall finance this project for you. It is a matter of finance. He is offering a help. He is promising to a person or to a company that I shall finance this project for you. Next, simple future tense is used to express something certain to happen, which is certain to happen, which will happen, which will take place certainly. We have no control over it. कुछ चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, नेचर विल शो इट्स fury. Nature will show, and usually nature shows its anger. Sometimes in the form of floods, and sometimes in the forms of fire, a forest fire, and sometimes in the form of a heavy rain. In this way, nature will show its fury and we have no control over it. To express an action which is certain to happen, जो होना निश्चित है, जिस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता, जिस पर हमारा कोई वश नहीं होता, कोई कंट्रोल नहीं होता, उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे. नेक्स्ट, द स्कूल्स विल रिमेन क्लोज्ड ड्यू टू COVID-19. वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट. हमारा कोई जोर नहीं चलता. स्कूल्स विल रिमेन क्लोज्ड ड्यू टू COVID-19. जब ये COVID-19 खत्म होगा, इरेडिकेट होगा या बहुत ही कम हो जाएगा, only then the schools will open again. But till then the schools will remain closed due to COVID-19. We have no control over it. Next is, simple future tense is used to express an offer or a help. If someone needs my help, then I can say, shall I assist you? Shall I assist you? For example, somebody is going, or an old lady or an old man is going with 2 heavy bags, and I am also following him. I can offer my help. Shall I assist you? Or shall we go to movie this weekend? This is a proposal. This is a suggestion. मान लीजिए हम कुछ फ्रेंड्स मूवी जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो I can give my suggestion, give my proposal by using simple future tense. Like, shall I go to movie this weekend or this Sunday or coming Sunday? In this way, I can offer a help or a proposal in simple future tense. Next is, simple future tense is used to ask someone to do something. अगर हमें किसी से कोई काम करवाना है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं, will you hold this bag for a while? For example, कोई बीमार है या कोई ओल्ड एज पर्सन है, उसे बस में चढ़ना है और वो उस बैग के साथ चढ़ नहीं पा रहा है या पा रही है, तो वो हमें कह सकता है, will you hold this bag for a while please? और will you please speak a bit louder? मान लीजिए टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, पीछे बैठे बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा है, तो दे कैन से टू टीचर, दे कैन आस्क टू टीचर, विल यू प्लीज स्पीक अ बिट लाउडर? इन दिस वे वी कैन से समवन टू डू समथिंग यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस. I hope you have understood the uses of simple future tense to express different actions in future. Dear students, अभी तक हमने सीखा कि हम किन किन एक्शंस के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे और किन डिफरेंट सिचुएशंस में
कौन कौन से एक्शंस के लिए जो अभी फ्यूचर में होने हैं उनको हम सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्सप्रेस करेंगे। आइए आज हम सीखते हैं कि एक एक्शन जो होना फ्यूचर में है, क्या उसको केवल फ्यूचर टेंस में ही एक्सप्रेस किया जा सकता है? नो, ए फ्यूचर एक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी वेज यूजिंग डिफरेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, I can express a future action or an action of future using simple present tense. I can express a future action using present continuous tense. I can express a future action using be plus going to form, and I can express a future action using be plus to infinitive form. And there are a few more ways to express a future action. हम एक फ्यूचर एक्शन को कई प्रकार से विभिन्न टेंस का प्रयोग करते हुए एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमें लगेगा कि ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसलिए फ्यूचर टेंस कैसे है? ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि एक फ्यूचर एक्शन को हम डिफरेंट टेंस का यूज करते हुए कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, या अगर उस फ्यूचर एक्शन को किसी दूसरे टेंस का यूज करते हुए लिखा हुआ है या एक्सप्रेस किया हुआ है तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा टेंस है, इसमें जो एक्शन है वो कब होगा। आइए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हुए how can we express a future action using simple present tense. Let us take a few examples. The meeting starts now. बहुत सारे ऑफिसर्स एक मीटिंग में बैठे हैं, मीटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। मीटिंग स्टार्ट होने का जो एक्शन है वो फ्यूचर में होगा, बट आई कैन से द मीटिंग स्टार्ट्स नाउ। कई बार क्विज में जो क्विज मास्टर होता है वो बच्चों से कहता है योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जबकि क्विज का टाइम उससे फ्यूचर में स्टार्ट होता है, चाहे वो एक मोमेंट बाद में ही शुरू क्यों ना हो, बट इट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट्स एस आफ्टर V1. दिस इज द सब्जेक्ट स्टार्ट्स नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, My exam starts on Monday. अभी शुरू नहीं हुए हैं एग्जाम, लेकिन मान लीजिए परसों मंडे है और मेरे एग्जाम मंडे से शुरू होने जा रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं My exam starts on Monday. एग्जाम स्टार्ट होने का जो एक्शन है ये फ्यूचर में होगा, उस बात को मैं कह आज रहा हूं, एक्सप्रेस आज कर रहा हूं यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट इज I can express a future action using present continuous tense. How? Let us see. China is planning to attack India. Nowadays, this news is the most heated, controversial news. China is planning to attack India. It may or may not plan, it may or may not attack in the coming future, but China is planning to attack India, and if it is planning to attack India, it will attack in future. In this way, this action can be expressed using present continuous tense. Next is I am leaving for the USA tomorrow. आज तो नहीं जा रहा, but it is a planned action, and I can express this future action which is planned to happen. I can express using present continuous tense. I am leaving for the USA tomorrow. This adverb of time phrase tells us about the action which is yet to happen. Next is I can express a future continuous tense, a future simple tense or a future action by using be going to plus V1 form. For example, I am going to resign from the committee. I am going to resign from the committee. अभी नहीं दिया है मैंने resign, but I am going to resign means I will resign. It can be expressed in be form,
going to plus V1. We can follow this structure to express a future action. For example, I am going to publish my book soon. I have not published my book so far. I am going to publish, form of be, going to plus V1 to publish my book soon. Means book publish होने का जो action है, it will take place in future. This is the action of future and can be expressed in be going to V1 structure. Next is, I can express a future action using be plus to infinitive without using going. Be plus to infinitive. For example, I am to see the doctor today. I am to see the doctor today. Next, he is to join IAF soon. मान लीजिए किसी का इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है, कॉल लेटर नहीं आया है, बट इट इज सर्टेन दैट ही विल ज्वाइन. तो हम कह सकते हैं ड्यू टू द सर्टेनिटी ऑफ द एक्शन ही इज टू ज्वाइन IAF soon. And the next, we can use let, we can use modal verbs, and we can use the phrase about to express a future action. Let us take examples of each. First of all, let me go. This is a structure, this is a sentence. Let me go. मैं किसी से जाने की अनुमति ले रहा हूं, जाने के बारे में कह रहा हूं, let me go. लेकिन जाऊं तो फ्यूचर में गा, एक्शन फ्यूचर का है, लेकिन यूज कैसे कर रहे हैं? यूजिंग let me go, let me do it, but I will do it in future. Next is modal verb, may. If I say it may rain today, what does it mean? Means if the rain takes place, it will take place in future, but I am saying now it may rain today. Next is the train is about to leave. The train is about to leave. ट्रेन छूटने ही वाली है, चलने ही वाली है, बट चलेगी कब? इन फ्यूचर. एक्शन का कौन से टेंस का हुआ? फ्यूचर टेंस का, बट यूज क्या कर रहे हैं? अबाउट टू. इन दिस वे वी कैन एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस in different ways, using different tenses, using different structures. Be familiar with these structures and go through an exercise based on these different ways. If you will watch my videos based on simple future tense and its uses, you will be familiar with all the structures to be used for future actions. Thank you very much.